that the carbon markets are going to be huge in coming future, and I would suggest all SNAs to take forward this. And what we can do is we can have a separate capacity building session for SNAs on the carbon markets, because in coming future it will be a very big. So all the presentation will be available on the area's website. After maybe Monday or Tuesday we are going to upload all these presentations. So don't worry on that part. Presentation will be available to all of you. Now I am requesting the best SNA selected for, I would say, all over the India, that is the state of Chhattisgarh or the CREDA. I will invite Mr. Katiyar to make a presentation on that. Thank you. ये तो है, इस पे लगा देना। कहाँ से करना है? ठीक। गुड आफ्टरनून। मैं आपके और लंच के बीच में आया हूं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी कुछ समय लग जाए तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू एरियाज, थैंक यू MNRE, थैंक यू everyone. We are 26th state. 2000 में हमारा जन्म हुआ। हम our area is like this. Population is 16th in India. We are the 9th largest state. 44% of area is under forest cover, centrally located. 5th best gender ratio among the all Indian state, which is the one of the parameter. And per capita energy consumption is twice the national per capita consumption. We are mineral rich state, first in coal and dolomite, second in the iron ore, and tribal population of state is 30%. Oh, sorry. This is the what CREDA is. It's not very important. This is the state power scenario. The total contribution of the capacity is 9%. Around 91% is the thermal energy and 9% the renewable energy. Solar contributes about 64%, and the 21% is the biomass, and 9% is the hydro, and 6% is the small hydro. This is our core competence. I want to focus on this. Our core competence is the solar irrigation pump, solar drinking water, remote village electrification, solarization of education and health institutions, and operation and maintenance. We have very robust system of the operation and maintenance in remote areas. And everything is being operated by two operational system. One is the human capital, and another is this online management system, RMS, or you may say that IT management. These are the major activities, not very important thing. This is our organization. This is our one of the core strength, जिससे कि organization चलता है, organization successfully किस तरह से आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि हमारी ये टोटल एम्प्लॉइज जो हैं वो बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, और हमारे पास जो स्किल मैन पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, सेमी स्किल्ड भी बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप रेस नहीं है हमारा व्हेन यू कंपेयर विद our turnover. I will show you in the next slide. This is the impaneled. We have very large number of system integrators. It is the 190
Vendors, we have a registered vendor 118. They are all functional. They are not just decorative piece of the contractor. We are having 18 contractor for the civil works, for the electrical works, PDN, and everything. This is the turnover and cost sharing. Our turnover in 2010, it was 76 crore rupees only. Today we are doing turnover 1215 crore rupees. This is on rural areas. I am talking about the rural areas for rural economy, not the big thing, not mega size projects and hydro not. It's for the rural perspective only. This is the further bifurcation of the turnover, M&RE share, state share. Most of the expenditure is coming through the state budget, that is 714 crores. And from the deposit works, we are getting 500 crores. So it comes around 1200 crore rupees. This is the balance between the income and administrative expenses. You will see in 21-22, the administrative expenses was the 3% of the turnover. This is the big key of the success. We have very less administrative expenses over our turnover. Very less. And it is reducing. Progressively, it is reducing year to year. This is the key point. Our turnover and income is increasing very steep progressively. Dependence on the human capital is slowly increasing, but not at the pace of turnover. In respect of the turnover, administrative expenses is also decreasing. So the success depends on the efficient management of the existing human resources as teamwork. We have very fine-tuned IT management system. Most of the major schemes are operated by an online implementation system, monitoring, feedback, complaint. All these are addressed by the mobile apps or the portals. We have very transparent system of functioning, and we always ensure the accountability in each and every step. This is the triangle of the success: implementation, feedback and complaints, and monitoring. They are integrated in information technology based. Very efficiently we are using this technology. This is the way forward, an attempt to be different. अभी आप लोगों ने कार्बन क्रेडिट के बारे में सुना. क्रेडा is the first organization, government organization in the India, and perhaps first in the world, जिसने कि अपने सोलर इरिगेशन पंप का रजिस्ट्रेशन कार्बन क्रेडिट के लिए कराया है. कई वाले बैठे हुए हैं, शायद वो इसको इंडोर्स कर सकते हैं यदि उनको मालूम होगा. तो हमने जीसीसी जो प्लेटफॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग का, ग्लोबल कार्बन क्रेडिट, ग्लोबल कार्बन काउंसिल, उस पे हमने अपने 18 प्रोजेक्ट्स डाले हैं. लगभग 81,000 सोलर पंप को, जो कि हमारे 2016 से 20 के बीच में लगाए गए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए डाला है, जिससे हमें उम्मीद है कि 4 लाख एनुअल कार्बन क्रेडिट ACC जनरेट होंगी 10 साल के लिए. यदि एक कार्बन क्रेडिट $5 में बिकता है इन वॉलंटरी मार्केट, तो आप लगा सकते हैं कि लगभग $40 लाख हमको मिलना चाहिए. So this will be the future source of income for the CREDA. This is the only one step. This is the baby step. On the next stage, we are going to submit proposal for further 55,000 solar irrigation pump projects under the rural electrification system, solar powered drinking water system, solar high mass for the carbon financing at the various carbon offset platforms. There are so many platforms. We have selected only one, that is the GCC. So at different carbon offset platform, we are going to put
we are going to apply for registration of all our projects which are very small projects. I'm not talking about the big projects, the small projects, irrigation, drinking water, rural electrification. पानी दे देंगे थोड़ा सा. Now this is the one of the keys scheme of the CREDA. आज की स्थिति में हमारे पास 1,16,570 more than 1,16,000 सोलर पंप्स हैं, जिससे एक्सपेक्ट 1,51,000 हेक्टेयर में लगभग सिंचाई हो रही है. इसका कन्वर्जेंस हम एनर्जी डिपार्टमेंट से करते हैं. MNRE से भी शुरू में 2-3 साल हुआ है और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होता है. टोटल छत्तीसगढ़ में 4,94,000 लगभग इलेक्ट्रिक पंप्स हैं. डीजल पंप 1,13,000 हैं और सोलर पंप 1,16,000 हैं. टोटल इरिगेशन का जो कंट्रीब्यूशन है सोलर पंप से वो 19% है. टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सोलर पंप इज 19%. This is the benefit impact. Second is related with the irrigation is solar community irrigation. We have total 226 projects and area under irrigation is 2540 hectare and total benefited farmers are 2290. Last year we have launched a new scheme, Indira Gaon Ganga Yojana, in which water from the rivers, anicuts, is pumped in from the solar pump into the village ponds for the necessary needs irrigation and also for the water recharge. एक साल में हम लोगों ने लगभग 20 ऐसे पॉन्ड्स को भरा है या इसको हमने सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल किया है और 28 पॉन्ड में अभी काम चल रहा है. टोटल हमारा इस तरह के 300 पॉन्ड्स जो हैं, जो बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं जिनसे कि निस्तारी और इरिगेशन होता है, उनको लेने का प्रावधान है. दिस इज द इम्पैक्ट. दिस इज वन सेकेंड मेजर स्कीम, सोलर रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम. फॉर ड्रिंकिंग वाटर purpose, we have installed 17,437 solar pumps in a habitation benefited is the 17,437. In Chhattisgarh, there are 19,635 villages. 19,635 villages. इसमें काफ़ी मजरा टोला पारा होते हैं. वो हैबिटेशन को हमने 17,000 कंप्लीट को कवर किया हुआ है. इसमें से 2800 गांव में CREDA is the sole source of drinking water for each and every household. CREDA is the sole source of drinking water. We are supplying for each and every households under the JJM scheme. We are the major implementing agency for the JJM in our state. Total installed system are 4,080 हैं, 83. Village covered are the 2,800, which are the 40% of the total village of Chhattisgarh. Benefited family are 1,85,590. I claim that CREDA is the sole source of 14% household drinking water supply in the state. And next 2 years, we will install 12,000 more solar drinking water systems under the Jal Jeevan mission. And by doing this, we will be supplying 30% of the household for the drinking water supply in the state. And I am talking about the supply in the each and every household. These are the configuration of the solar pump which we install. One is a 6 meter, 5,000, 6 meter for 10,000 liter, 9,000 with the 10,000 liter and 12 meter, 10,000 liter.
Third major scheme is the rural electrification. This is the state scenario. Total village electrified are 19,567. Number of village electrified through the conventional grid is 18,626. And total household are electrified through the grid are 62.4 lakhs. And by solar system, we have in sole source of energy in 941 villages, which is about 5% of the total village of the Chhattisgarh. 5% of the total villages. Total household are around 1 lakh, in which we are the sole source of energy supply through the solar system. There are two major institutions. One is the health center and education centers, hostels, schools, ashrams, in which we are installing solar rooftop systems for the purpose of assured and quality supply of the energy. Total health centers in which we have installed is 6,100. Total health centers are 6,121. 1,468 health center has been solarized by CREDA, and the cumulative capacity of the solar system is 4,680 kilowatt. Convergence is from the Health Department, National Health Mission, District Mineral Fund, Corporate Social Responsibility. These are the breakup of, we have 28 district hospital in which 26 are solarized, 169 community health center, 165 are solarized, 785 are primary health centers, 783 are solarized. Sub-health center are 5,186, 500 are solarized, and next 3 years we are going to solarize all our sub-health centers within the next 3 years. These are the impact of healthcare and future plan. 4,000 sub-health center in the next 3 years. This is the education center. Total school electrified are 1,124. Student benefited is 1.5 lakhs. And apart from it, we have solarized 1,870 residential hostels and campus. Students benefited are 1,30,000. Another major scheme is the solar high mast. In rural areas, on the major chowk, chauraha, and the commercial or social activities place, we install high mast, solar high mast. The configuration is 6 meter, 9 meter, and 12 meters, depending on the area and locality. And till now, around 3,383 solar high masts have been installed in 3,061 villages. 3,061 villages we have installed the solar high mast system. This is the solar street light through the SPV power system. I'm not talking about the standalone street lights. CREDA has banned standalone type of the street lighting system. It is useless, worthless. It's just sheer wastage of the money. All our street lighting system is running through the solar power plants. It's a centralized system. Total village covered are 888, and the cumulative solar capacity of the solar is 2,505 kilowatt. Most of the power plant are 1 kilowatt to 20 kilowatt systems, and they are installed as per the requirement of the villages. This is the system, the centralized system in the village. Another scheme is the solar cold storages. Till now, it's not very popular one.
but with the help of horticulture department and agriculture department, we are slowly implementing it. It's within 2 or 3 years, we have installed 65 number of the solar cold storages of 5 metric ton storage capacity. This अभी तक हमने आपको जो कुछ बताया है वो हमारी मेजर स्कीम्स थी, एक्टिविटीज़ थी जो कि हम रूरल एरिया में कर रहे हैं। इस सब के लिए, इन सब को चलाने के लिए हमको एक ऑपरेशन सिस्टम चाहिए जिसको कि हम ONM कहते हैं। और यदि आपके पास रोबस्ट और इफ़िशिएंट ऑपरेशन सिस्टम नहीं है तो आप इसको सक्सेसफुली नहीं चला सकते हैं। सो आई क्लेम हियर वाई कि वी हैव वेरी रोबस्ट ONM सिस्टम जो कि हर एक गांव में फैला हुआ है। हमारे ऑपरेटर्स हैं, क्लस्टर टेक्नीशियंस हैं, हमने यूनिट्स डिवाइड की हुई हैं, विलेज को यूनिट बनाया है, उसके बाद क्लस्टर्स बनाए हैं एज पर द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट पे अपने यूनिट्स हैं। तो इस तरह से हमने अपने ONM को एक पिरामिड शेप में रखा हुआ है। चैलेंजेस थे हमारे पास बजट का, स्किल मैन पावर की, एबिलिटी ऑफ लोकल लेबर की, थेफ्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, मॉनिटरिंग, फीडबैक, LWE एक्टिविटीज़, लेकिन उसको हमने काउंटर करते करते अपने इस सिस्टम पे ले आए हैं। टोटल हम अभी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो हैं 28,794 प्लांट्स को, और इसके अलावा मोर देन 93,000 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स को। ये हमारे ONM पे पड़े हुए हैं ऑनलाइन सिस्टम पे, और इसके लिए हमारे पास मोर देन 500 जो हैं वो स्किल्ड और ट्रेंड स्टाफ है, मैन पावर है लोकल लेवल पे। 100 प्लांट को हम एक क्लस्टर बनाते हैं और उन क्लस्टर पे एक टेक्नीशियन रखते हैं। हर टेक्नीशियन के पास तकरीबन 5 से लेकर 10 ऑपरेटर्स रहते हैं जो कि अलग अलग जगह पे, जहाँ डेली बेस पे वो उनकी मेंटेनेंस को करते हैं जाके। 28 डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो होता है वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट करता है, कंप्लेंट को रजिस्टर करता है, उनका रेक्टिफिकेशन करता है, और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का भी जिम्मेदारी उसकी है विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर टेक्नीशियंस। इसी तरह से रीजन्स हैं, जोन है, हेड ऑफिस हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर्स हमारे डेली बेस पे काम करते हैं। क्लीनिंग का काम, रिकॉर्ड कीपिंग का काम डेली बेस पे होता है हमारे इतने प्लांट्स के ऊपर, 28,000 प्लस 93,000। ऑपरेटर को हर प्लांट पे जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी से। एंड ये जितने भी हमारे स्किल्ड लेबर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, हायर एंड फायर। या तो जब वो स्किल हो जाते हैं तो वो खुद ही अपनी कुछ दुकान खोल लेते हैं या मेंटेनेंस का काम शुरू कर देते हैं, या सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ वो अलाइन हो जाते हैं, अपने सर्विस सेंटर्स खोल लेते हैं। तो एक हम नेटवर्क जो है एक रूरल एरियाज़ पे, टाउन एरियाज़ पे बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये सारे लोग स्किल्ड लेबर ट्रेंड होते जा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल है। हमारा बजट जो स्टेट से हमको अभी स्टीप राइज हो रहा है ईयर टू ईयर, 40 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं सिर्फ इस ONM पे अपने सिस्टम को बनाए रखने में। इसमें वो इंक्लूड नहीं है हमारे जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, या जो हमको सामान लगता है। इट्स फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस एंड छोटे छोटे जो उनके इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इट इज़ ऑल फ्रॉम द स्टेट बजट। वी आर नॉट टेकिंग सिंगल पेनी फ्रॉम आवर बेनिफिशरीज। Being a welfare state, government is not keen to charge anything for the maintenance of the system. It's not freebies, it's requirement. This is the network of the ONM. These are the schemes which are covered. These are the activities जो कि ONM के अंतर्गत आती हैं. This is the flow of informations. कंप्लेंट्स जो हमारे पास आती हैं उनको हम किस तरह से एड्रेस करते हैं।
दीज आर द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे पोर्टल्स पे हैं, वेबसाइट पे हैं, टोल फ्री नंबर है, मोबाइल ऐप है, इन सब पे इसका सबका हम लोगों ने बखूबी से इंटीग्रेशन किया हुआ है। कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं हो सकती कि जो कि अनअटेंडेड या बगैर किसी के सिस्टम के थ्रू चली जाए, बाईपास हो जाए। दिस इज द प्रोसेस। एवरी सिस्टम 1 महीने में हमारा जो है मॉनिटर होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्लेंट की एनालिसिस होती है, उसके बाद एक्शन टेकन होता है, उस एक्शन को ऑनलाइन डालते हैं कि हमने ये चीज़ हो गई है। हर एक डैशबोर्ड है हर लेवल पे। हमारा डैशबोर्ड हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं या सीएम हैं उनके पास भी है, वो भी चाहें तो वो देख सकते हैं। तो हमारा टोटल जो ओएनएम का सिस्टम है वो 2 खंभों पे टिका हुआ है। वन इज द आरएमएस, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड अनदर इज द ह्यूमन कैपिटल, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है। दिस इज द ऑनलाइन पोर्टल। I think, yeah, sure. Good afternoon, sir. I'm Sasmita from Orida, Odisha. Yeah. Sir, actually, we are looking up because the number of RE assets of Odisha are now out of the CMC period of 5 years. Yes. And with a cyclone, because Odisha is a cyclone-prone area, so with a small cyclone or some, with the time also, the battery and the inverter doesn't function, and the asset becomes non-functional. So that is becoming a headache in Odisha. So, sir, are you talking about here beyond 5 years? Yes, I am talking about this ONM is for the systems which have completed 5 years. This is for them. So that is CREDA's own initiative to maintain the assets? Yes, yes. So then the question comes, sir, if suppose in a cyclone or the module gets damaged or you need a certain capex to revive one RE asset, so then what step is being taken, sir? Yes, I will let you know. Thank you, sir. अभी एक्चुअली हमारे जो सोलर पंप हैं जो हमारे फर्स्ट फेज में लगे थे उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं इस जून को। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उन सोलर पंप को हम किस तरह से मेंटेन करें, क्योंकि वो छोटे छोटे किसानों के यहाँ लगे हैं। हमने जितने भी पंप लगाए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 5 HP के पंप से ऊपर किसी किसान को नहीं लगाने दिया है। मोस्ट ऑफ द पंप 75% ऑफ द पंप आर 3 HP पंप, जो कि छोटे, हमेशा ही जब भी आप छोटे से कम हार्स पावर का पंप लगाएंगे, इसका मतलब है आप छोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को एड्रेस कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम सिर्फ 90% फार्मर्स हमारे यहाँ 3 HP वाले हैं, 3 HP के पंप लगा रहे हैं। तो नेचुरली वो सब छोटे छोटे फार्मर्स हैं। तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इट्स मैंडेटरी। हर एक पंप का इंश्योरेंस होगा, जिसके लिए हम 500 रुपये पर पंप खर्च करते हैं। हर एक सिस्टम के 500 रुपये देते हैं पर एनम। अब जो हमारे पंप जो जिनके 5 साल पूरे हो जाएंगे उनका भी हम इंश्योरेंस करा रहे हैं एट द कास्ट ऑफ क्रेडा। दूसरा ये है कि अब इन पंप को हम जब हैंडओवर करेंगे किसान को, क्योंकि टिल नाउ दे आर अवर बेबी, हमारे पास हैं, वो हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर्स देख रहे हैं। तो 5 साल बाद व्हाट विल हैपन टू दीज, सो इट्स अ बिग नंबर, मोर देन 1 लाख पंप्स। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इन पे ओएनएम पे लगभग हमारा जो खर्च आएगा वो होगा 3, नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। यदि आप देखिए नंबर, एवरीथिंग इज ऑन डिपेंड ऑन द स्केलिंग मास। चूंकि हमारे पास एक पहले से ही बहुत रोबस्ट ओएनएम सिस्टम है, अधिक से अधिक जो हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो
एक पंप पे जो खर्च आएगा पर एनम जो खर्च आएगा वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने यही कैलकुलेट किया ना, 2,000 रुपीज़, 1,000 फॉर द this payment for the skilled labor and 1,000 for the material and 500 for the insurance। तो टोटल पर पंप या पर सिस्टम कह लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर होगा तो वहाँ अलग पैरामीटर रहेगा, लेकिन 2,500 रुपये से अधिक एक पे खर्च नहीं आएगा आप यदि इफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपको। ONM जो है वो इफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए। आपके पास स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, आपके पास इंटीग्रेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आना चाहिए। यू शुड बी द हब ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप एक सिस्टम आज खराब हो रहा है उसको 15 दिन में या 20 दिन में बनाएंगे तो दिक्कत आएगी, और ज्यादा खराब होता जाएगा वो। आप इमीडिएटली उसको, आप पंखा, घर में आपका पंखा होता है, टीवी होता है, आप जितने दिन बाद बनवाने जाएंगे उतने दिन और ज्यादा उसके लूज होते जाएंगे। गाड़ी के साथ भी यही होता है, सेम सोलर सिस्टम के साथ। Sir, these pumps you are talking about are all DC pumps or also you have AC pumps? We have DC pump, we have AC pump, all the configurations. We have submersible, we have surface pump, we are having 3 HP, 5 HP, but never beyond the 5 Sir, HP. actually Odisha is facing more problem for this DC pumps actually because this are not being repaired nearby. DC पंप को बनाना मुश्किल काम है, लेकिन यदि आप सफिशिएंट नंबर में आपके पास DC पंप हैं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बदनामी से बचने के लिए आपके यहाँ सर्विस सेंटर खोल देता है। जैसे हमारे यहाँ सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं सर्विस सेंटर्स, क्योंकि दे आर बिग मैन। जितने पंप हम लोग लगा रहे हैं, देखिए ड्रिंकिंग वाटर में हमारे यहाँ मैंडेटरी है ग्राउंड फास्ट का पंप लगाना, मैंडेटरी ग्राउंड फास्ट पंप। इवन आवर इरिगेशन पंप, ऑल द स्टैंडर्ड कंपनी वी सेलेक्ट only and only standard companies. We don't allow the local companies. Yeah, sure. Yes. Yes. After that also definitely you're touching on a point. But we mostly have very high capacity pumps as the water table in Punjab has gone down very badly. Rather, we had been requesting Government of India for giving us 15 HP, but they have given this to hilly and northeastern states. We are again representing the Government of India on this. So mostly our pumps are in this 7.5 HP range and above, even 10 HP also. So currently this scheme is also getting implemented at a very large, I mean to say, scale. But what we see, we do a lot of meetings with these, I mean to say, system integrators and pump, even Tata Power. A lot of these companies are operating in Punjab. But since I have seen your organization strength and I've been visiting earlier also, I had a good interaction with your organization. Okay. But such kind of setup, definitely we don't have, frankly speaking. We will definitely like to maybe take your more time or maybe have a integrative session which can be done on VC later on. Because collaborating on these kind of, what should I say, plus points which many other organizations have is very, very important for areas. So I had been earlier requesting your chief engineer also that we can collaborate and maybe draw out from your experiences onto this, since you are saying that it is only 2,000 to 2,500 rupees, yes, which is going to be expense per annum. Yes, yes. Then we will definitely like to have more, I want to say, in-depth interaction with you on these matters. Thank you so much. Sir, I have a question, sir. Yeah, sure. This side, sir. जी. Sir, myself, Suraj Dharma, project director from TREDA. सर, हम लोग भी जो गांव में काम कर रहे हैं, बहुत अंदर है गांव का, वहाँ पर मतलब कि यू कैन से वन द रिमोटेस्ट एरियाज मीन्स हम लोग को फंड भी कुछ मिला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो हम लोग का ऐसा जगह है जहाँ रूरल ड्रिंकिंग वाटर ना गाड़ी जा सकता है ना वहाँ खुदाई कर सकते हैं, पत्थर है, तो हम लोग को वहाँ पे कठिनाई हो रहा है। स्ट्रीम है, छोटा छोटा स्ट्रीम है, जैसे एक दो जगह पर जैसे कि हम लोगों ने कर दिया ऑलरेडी ड्रिंकिंग वाटर, आज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है,
थ्रू FRP बेसल करके ग्राउंड वाटर करके वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत रिमोट है और वहाँ पे फैमिलीज लगभग 25 फैमिलीज 30 फैमिलीज रहते हैं, लेकिन उन लोगों को सालों मतलब अभी तक उन लोग पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है सर, वहाँ पर जो है डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है और मतलब कि वाटर बॉर्न डिजीज बहुत क्रिएट होता है और लोग छड़ा का पानी पीता है। तो आप लोग कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हम लोग के साथ कि कैसे हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मिटिगेट दिस। वी आर ट्राइंग बट वी वांट अ बेटर एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड। डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर। छत्तीसगढ़ में जो ऐसे बहुत सारी लोकेशन है विच आर जियोग्राफिकली डिसएडवांटेजियस। हम नक्सल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेफ्ट विंग व्हाट आई से दैट एक्सट्रीमिज्म नॉट टेररिज्म। हिली एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ की फॉरेस्ट है, 44% ऑफ द फॉरेस्ट लाइक त्रिपुरा। आई हैव विजिटेड त्रिपुरा, लेकिन और हम उन्हीं एरिया में काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसमें कि हम लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब हम टेंडर डिजाइन करते हैं, जब हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द SI सिस्टम इंडिकेटर वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जब डिसाइड करते हैं, वो वहाँ रॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप पे आप हमारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, आप हमारे यहाँ सारा काम करना है सिस्टम इंटीग्रेटर्स को। आप बता रहे हैं हमारे यहाँ नाव से लेके गए हैं, मैं कोई वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, हमारे यहाँ नाव से लेके गए हैं, नाव से, बोट, ट्रैक्टर से लेके जा रहे हैं हम लोग। हमारे नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग समझौता कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात, और वहां हम लोग काम करवा रहे हैं जाके। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट स्किल। On the record, sir, setting up a microgrid, elephants hire करके 50,000 per hour, elephant hire करके इन्वर्टर हम लोग लेके गए हैं। हाँ हाँ, बाहर से। सेम वी आर डूइंग इट। हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप जब टेंडर डिजाइन करते हैं या जब आप एग्रीमेंट करते हैं अपने वेंडर से, तो वहां सबसे बड़ी उस समय हमको बहुत वे शुड बी केयरफुल, वे शुड बी कॉशियस। हमारे टेंडर आप यदि देखेंगे तो हमने सारी की सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिस्टम इंटीग्रेटर पे डाली हुई है। वी आर पेइंग हायर देन द MNRE स्टैंडर्ड्स, मच हायर, 10%, 20%, 15%, समटाइम्स 30%। लेकिन हमारे यहाँ इंटीग्रेटर अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता है। हर साल मैं 2 या 3 इंटीग्रेटर्स को ब्लैक लिस्ट करता हूँ। इस साल हमने 4 सिस्टम इंटीग्रेटर को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। दिस इज द अकाउंटेबिलिटी। So it is okay, means how to mitigate that person. I don't know that technology is suitable or not. I think then one technology what I am hearing is air to water generator, because पानी पीने को सबका हक है। That is what जो गांव का वो है उन लोगों को भी हक है, लेकिन हम लोग जो पानी का अरेंजमेंट नहीं है ना, वो कर नहीं पा रहे। जैसे हम लोग माइक्रोग्रिड करना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया था, बहुत रूरल एरिया, लेकिन पीने का पानी नहीं है, वो कैसे सॉल्व करना है, वो दैट्स अ चैलेंजिंग जॉब फॉर अस नाउ। एक्चुअली क्वेश्चन है, जो ये कॉन्टामिनेटेड वाटर है ना थोड़ा का, उसको हम प्रोसेस में लाके उसको प्यूरिफाई करने का कोई प्रोसेस आप लोग लगाए क्या? वो हम एक्सपीरियंस मांगते हैं। हम लोग RO सिस्टम लगाते हैं अपने उसमें। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये आपको इसमें देख सकते हैं, सोलर वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन 325 326 सिस्टम्स में है, जिसमें कि हमने RO लगाया हुआ। हमारे यहाँ भी कैल्शियम है, आयरन है, आर्सेनिक है, हार्ड वाटर है। तो आयरन तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ में। तो इन सब में वी आर पुटिंग वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स। हम लोग भी कर रहे हैं वही सिस्टम, लेकिन सर आप आगे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जैसे छड़ा का पानी हम लोग उठा के उसको प्यूरिफाई करके जी वहाँ पे हम लोग गांव का लोग पिला सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम हम लोगों ने नहीं किया, बट वी आर ट्राइंग टू डू। इफ यू कैन शेयर सच कैन। आप आइए छत्तीसगढ़ में, आपको इनवाइट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको सिस्टम्स। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि मैं जो कुछ यहाँ से बोल रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ, आप आइए छत्तीसगढ़, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और आप आके देखिए कि हमने किस तरह से उन लोगों के लिए काम किया है जिनके पास कुछ नहीं है, लंगोटी के सिवा कुछ नहीं है। बड़े अथॉरिटी से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। थैंक यू। हमारी बुकलेट्स हैं, यदि किसी को लिटरेचर चाहिए होगा, इट्स वहाँ काउंटर पे रखे हुए हैं। जी जी, we'll take up this conversation separately.
we'll have short क्या of बोल time. रहे हैं? RMS की बात. हाँ RMS है ना. So CREDA has given this booklet. One is for the what are the initiatives taken by the CREDA. Another is how they are implementing this online and monitoring system. So these are the, of course, these are the limited copies, one each for SNA. Don't take that 2-3 for each SNA. These are available at this counter outside. Thank you. So thank you, Mr. Katiyar, for making a wonderful presentation on the initiatives by the CREDA. And of course, that's why you are #1 SNA. So before breaking for lunch, I would request MD Credal, who is also Vice President of Areas, to make a short presentation on the activities being taken by the Credal. Thank you. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Jatani sir, for making that wonderful introduction in the morning about ARIAS, how it formed, and what are the objectives and mission of the ARIAS, and about the previous foundation day and this foundation day. In fact, we were willing to host this one also. It's nice to be here in Cochin today. I'll quickly make my presentation on Karnataka's initiatives on renewable energy projects. Right now we stand in number 4th in the country with an installed capacity of 15.5 gigawatt, whereas in case of solar we stand number 3 with an installed capacity of 7.5 gigawatt. In wind we are number 3 with 5.2 gigawatt of installed capacity. And we contribute, RE contributes almost more than 50% to the total capacity of the installed capacity. In the state of Karnataka, total installed capacity is 30,000 megawatt, whereas the RE is almost 15.51 gigawatt. And our journey to this level was not very simple. You all know Karnataka is a pioneer in bringing policies. Way back in 2009, we bought a first renewable energy policy in the year 2009 to 2009 to 14. During the beginning of the policy period, we were just 2.4 gigawatt, but by the end of the policy period, we could touch around 4.3 gigawatt. Subsequently, we brought solar policy, and that is the time, the growth was really phenomenal. From 4.5 gigawatt, we touched around 15.1 gigawatt by the end of the policy period. And recently, we have launched a new renewable energy policy for the period from 2022 to 27. We are aiming to touch around 10 gigawatt during this policy period. These are some of the major factors in the RE policy. We are encouraging even ISTS projects too, apart from INSCS projects. And we are, deemed conversion for the land conversion status. We have brought into the Karnataka this thing, because that's a major problem being faced by the developers. There's a major change we have made. Of course, apart from that, we have ABC, that is affidavit-based clearance. The moment developer starts an application, he can file an affidavit and then start ahead with the process of going ahead with the implementation of the project. And of course, there are other benefits too in this policy.
In this policy, we are not only restricting to solar and wind, but of course we are promoting all the new technologies, whether it is energy storage or hybridization or repowering or floating solar or any other technology which is available across the globe. Of course, Karnataka has also brought out new energy conservation and energy efficiency policy for the period from 2022 to 27. Under this policy, we are aiming to conserve around 744 million kilowatt hour of energy, which would have rather avoided, around 454 gigawatt of thermal plant, in turn reducing carbon emission to the tune of 6 lakhs tons. We are working in 5 sectors, that is municipal, domestic, agriculture, commercial, industrial, having separate targets to conserve energy. Of course, with the support of MNRE, we are implementing this Kusum B component. We are having a 10,000 pump set target. We have already called invited applications. We have received, we are getting a good response to implement this project. Kusum C is one major project. Already, we are in the process of inviting tender. Maybe very soon we'll call the tenders for, agriculture field solarization. And to march ahead, we are setting up one research chair, either in IIT Chennai or Indian Institute of Science. We are just exploring, but soon this will be a reality. Green hydrogen is one major thing which we are focusing on. Of course, we want to bring out a policy, to augment in this sector. We are working towards this, involving all the stakeholders. And before that, we want to have a national conference in this regard, involving, Karnataka is fortunate, we have the first mover advantage, like we are the US company, that's OMIM, already set up a base in Karnataka. And we have R&D institutions like Indian Institute of Science, and we have a consumer base because Karnataka has got mineral resources. We have a lot of consumer base for the steel industries. Of course, we have MRPL, refineries, and we have chemical, fertilizer manufacturers too. And we have, as far as the transportation sector is concerned, we have GAIL, Lindsay, Praxia, such companies. And, we have, Karnataka is also home for companies like Volvo, Tata, and Toyota, which are also into manufacture of hydrogen fuel cells. And we have bought this data from Nive, data up to the level of Taluka, and we have hosted it on our website too, just for the ease of doing business. This data is readily available for the investors so that they need not to go for putting up the wind mast and going for the study. Immediately they can take up the wind projects. This is our new building, which is recently we have moved into. This is state-of-the-art building for the cradle. It's around 6-story building with around 1.5 lakh square feet of built-up area. This is specially designed to save 30% of energy. It is super ECBC building, energy conservation and building code compliant building. In fact, whenever the next opportunity comes, we want to host everybody in this new building. We have state-of-the-art auditorium too in this building. Recently, we participated in Windergy held in New Delhi, and we could sign MOUs with 9 companies to the tune of around 61,000 crores, amounting to around 9.2 gigawatt of wind projects. These are the upcoming projects. We are coming up with one 500 megawatt, sorry, it's being reduced now. We are just working on it in Kalburgi with the support of MNRE. This is one project we are again taking up 5 megawatt solar and 16 megawatt hour hybrid, battery storage project in Pagoda Solar Park. Of course, we are also coming out with a pilot project on floating solar, 1 megawatt capacity in Kalburgi. This is one major initiative we have taken up. This has already come out in our budget also. We are planning to come out with 5 gigawatt hybrid park with storage, probably in northern part of Karnataka, because Karnataka has the highest it has the highest potential for wind potential. So with that, we want to make that resource useful and want to develop this major initiative. These are some of the new initiatives. In that new building, what you saw in the picture, we are starting up one incubation center for the startups.
Apart from that, one skill development center for the ITI diploma and for the 10th PU pass students so that they get readily employable in the RE sector. And internship programs is one wherein we give opportunity for the engineering students for the internship program so that they can come make the research and so that we can address the problems of the industry. Thank you so much for the opportunity.